All right. Hi everyone. Good morning. मेरी आवाज आ रही है? Can you guys hear me and see the screen? Yes. Yes. Good morning, sir. Everyone. Now, taking a stock of things. आप लोग लास्ट वीक के डाउट लेक्चर में नहीं आए? Sorry, sir. उसकी वजह से मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया of how I wanted to complete things. अच्छा, हमारा ये जो डाउट्स है ये डिस्कस हो चुका है? Yes, sir. ये हो चुका है, sir. ये हो चुका है. Okay then. ठीक है. So I'm sending across some more homework for you to practice based upon what we have learned in the last class as well as what we'll learn in today's class. All right, sir. ठीक है. Now दो मुझे. Okay. P39 ठीक है. So I have sent it across on the group. That is what you should target as the next set of questions based upon. Yes, sir. Now, last class में हम लोग factors affecting equilibrium पढ़ रहे थे, and we had discussed 3 factors. The Yes, sir. concentration, the second was pressure, and the third was volume. Right? Based upon that, how the equilibrium shifts, we had discussed subjective as well as numerical ways of knowing about how a disturbance would shift the reaction. The subjective way was based upon the statement of LCP. The numerical way was based upon comparing Q and K. याद है? Yes, sir. Yes, sir. अगर याद नहीं भी है तो याद करना पड़ेगा आज की क्लास में, because after doing couple of more factors, I am going to do at least 10 questions on these factors that affect equilibrium, how they are going to shift the reaction forward or backward. So notice करते हैं. Let's look at this fourth factor, which is effect of addition of inert gas. Now, this factor can be understood again in terms of effect on volume or effect on pressure, because inert gas, as per the name itself, will not react. Okay, this is not going to consume reactants or products or react with them. What it is going to do is it is going to impact the pressure and volume of the reaction vessel, and as a consequence bring in some change. तो यहाँ पे अपन नोटिस करेंगे 2 सिनेरियोज में. अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में इनर्ट गैस डाल रहा हूं, then what I am seeing is that there is no effect. Why is there no effect? You can actually look at from the perspective of QC or QP. दोनों से आप देख सकते हो. अगर अपन QC के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो QC is Qn into V की पावर माइनस डेल्टा Ng. Yes, sir. अब अगर मैं इनर्ट गैस डाल रहा हूं तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये मोल्स वाला टर्म इंपैक्ट नहीं हो रहा है. मैंने बोला हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में डाल रहा हूं तो वॉल्यूम में इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ देम इज गेटिंग इंपैक्टेड. तो एज अ रिजल्ट
Q does not change and there is no shift in the equilibrium. Yes, sir. Now, some of you might wonder, sir, then how about from the perspective of QP? Because QP is equal to QX into P total raised to the power of delta Ng. So you might be wondering कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं? Yes, sir. So you might be wondering that then this changes Q, and if it changes Q, then it would shift the equilibrium. Yes, sir. लेकिन यहाँ तो मैंने no effect लिखा हुआ है. So can someone put their brains and help us sort out this doubt? क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, sir. Like I have a strange feeling that क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है. रिपीट कर. ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन. तो पहले तो मैं एक्चुअली इसको तो छुपा देता हूँ, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय रीडिंग ऑल ऑफ दिस. अभी आई एम डिस्कसिंग दैट अपॉन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. ठीक है, द आंसर आई हैव गिवन टू यू इज नो इफेक्ट. एंड हाउ डिड आई एक्सप्लेन इट? I explained it by helping you notice QC, which is equal to Qn into V की power minus delta Ng. And I told you that upon addition of inert gas, neither the moles are getting impacted, nor the volume of the system is getting impacted because this is a rigid vessel. As a consequence, the Q value is not impacted. Q कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो there is no shift in the equilibrium. ये सबको समझ में आ गया? हाँ, sir. Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं that typically a doubt comes, ठीक है, which generally comes from students only, but मैंने ही आपसे पूछ लिया that if I look at from QP perspective, then I can see that upon addition of inert gas, अगर एक rigid vessel में मैं और गैस ऐड करता हूं तो टोटल प्रेशर बढ़ जाता है ना? Yes, sir. तो फिर QP अफेक्ट हो रहा है. Then depending upon delta Ng पॉजिटिव है नेगेटिव है, शिफ्ट तो होना चाहिए था ना? हाँ, sir. तो फिर क्या, क्यों, मतलब कौन सही बता रहा है, ये बता रहा है कि वो बता रहा है? पार्शियल प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है. पार्शियल प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज आल्सो अ गुड थॉट. किसने दिया है आंसर? सर वत्सल. वत्सल ने. ठीक है वत्सल. सो वत्सल इज बेसिंग हिज आंसर आई थिंक बेस्ड अपॉन डाल्टन्स लॉ, जिसमें हमने देखा था कि एक गैस को दूसरी गैस से फर्क नहीं पड़ता है इफ दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर. तो पार्शियल प्रेशर क्यों ही चेंज होंगे? इवन इफ आई ऐड सम अदर गैस, टोटल प्रेशर में ऐड हो जाएगा. ठीक है, बट अगर इफ आई लुक एट द QP का एक्सप्रेशन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स upon partial pressure of reactants raised to the power of their coefficients, the partial pressures would not change, and as a result QP will not change. Fair enough, Vatsal. Very good. The other way, molar concentration. हाँ, molar concentration also doesn't change. correct. वो molar concentration भी change नहीं होगा. That is also a way of putting it. From this expression perspective, you can see that I can put QX as Qn upon n total raised to the power of delta Ng. जो QX होता है वो क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. Yes, sir. मोल्स अलग कर लिए और टोटल मोल्स अलग कर लिए मैंने, तो वो Qn और n टोटल की पावर डेल्टा Ng बन गया. Now you can see that if I merge these two, P total upon n total raised to the power of delta Ng,
तो आई कैन ऑल्सो क्लियरली सी कि इनर्ट गैस ऐड करने पर ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है. द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट ना. दैट्स व्हाई देयर इज नो इफेक्ट. ऐसे भी समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर. Yes. Yes, sir. ठीक है. Good. So this was the impact under constant volume conditions. What if I add inert gas under constant pressure conditions? Constant pressure conditions मतलब visualization कैसा होता है? You have a piston वाला vessel, right? Such that the internal pressure is equal to external pressure is equal to constant. तो अब अगर इसमें मैं inert gas डालूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? Volume बढ़ जाएगा, Yes, sir. है ना? अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मैं कैसे आंसर कर सकता हूं? दिस वुड बी द सब्जेक्टिव वे बेस्ड ऑन एलसीपी स्टेटमेंट. ठीक है, दैट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर गैस मोल्स. हाउएवर, if you are not comfortable with the subjective statements, you feel it is fast but it is like confusing ratta, then you can skip it. I don't mind. You can go via the mathematical approach. Mathematical approach क्या था? QC is equal to Qn into V की power minus delta Ng. Now depending upon delta Ng, you will have V either in denominator or in numerator, right? And if V is increasing, say delta Ng is positive, V is in denominator and V is increasing, तो denominator बढ़ने से Q क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Q less than K हो जाएगा तो शिफ्ट किधर होगा? फॉरवर्ड. याद आ रहा है ये एनालिसिस? Yes, ये sir. Yes sir. Yes, Yes sir. sir. लास्ट क्लास में करी थी वैसे चेन ऑफ थॉट. राइट, इन केस डेल्टा एनजी इज नेगेटिव तो ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो वी किधर आ जाएगा? न्यूमरेटर में, है ना? एंड Yes, sir. इनर्ट Yes, sir. गैस ऐड करने पर वी बढ़ रहा है, दैट इज न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो क्यू का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्यू बिकम्स मोर देन के एंड द शिफ्ट इज बैकवर्ड. ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, लिखा सबने? Yes sir. ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. Now, this is going to be a bit different from the previous factors because the previous factors changed Q, reaction quotient. ठीक है, initial equilibrium रहता था, Q K के बराबर रहता था, and if concentrations were changed या pressure, volume, right, were changed या some inert gas was added, then what did it change for the reaction? It changed the Q value. And based upon that change, the shift happened forward or backward. However, if we notice this factor, effect of temperature, this is going to impact the equilibrium constant, K. That is going to then shift the equilibrium. Right? We remember that factors affecting equilibrium Yes, sir. constant में temperature was the only fundamental factor. Yes. Yes, sir. All right, so let's see how it impacts. Okay, if I
increase temperature, equilibrium constant increase होता है कि decrease होता है, how do we make that call? तो उसके लिए थोड़ा सा background लगेगा thermodynamics का. So there is this equation that comes from thermodynamics, which relates delta G, that is the change in Gibbs free energy of the reaction under general conditions. Delta G naught, which is Gibbs free energy का change of a reaction under standard conditions. You remember standard conditions? Do you remember standard conditions? Thermodynamics में आपने पढ़ा था. Let's say if I have this reaction N2 gas plus 3H2 gas giving 2NH3. All gaseous species are there. What do I mean by reaction under standard state? It means gases are behaving ideally at a partial pressure of 1 bar. ठीक है, तो N2 का partial pressure 1 bar हो, H2 का partial pressure 1 bar हो, ammonia का partial pressure भी 1 bar हो, right? All the species are under their standard condition. That is when we say that the reaction is under standard condition. Now इस केस में जो delta G होगा, यानी कि Gibbs free energy of products minus Gibbs free energy of reactants, that will be referred to as delta G naught. ठीक है, नॉट का सिंबल लगा देते हैं. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. If let's say you had certain other values, for example the same reaction, ठीक है, मान लो if N2 was some P1 bar, H2 was some P2 bar and NH3 was some P3 bar, right? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल कंडीशन. नाउ इस केस में जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट विल बी रेफर्ड टू एज जस्ट सिंपली डेल्टा जी. ठीक है. नाउ हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? सो दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय रिएक्शन कोशेंट. रिएक्शन कोशेंट में क्या होता था? एक्टिविटीज लिखते थे, एंड एक्टिविटीज कैसी लिखी जाती थी? Right? Activities represented participation of reaction species with respect to their standard state. Yes, sir. Okay, so this is the relationship that relates them. Of course, you might be wondering, does it have a proof? Where does it come from? The answer is yes, it does have proof. However, that proof requires us to be like to go into the depth of thermodynamics, to go into the depth of what activity means, what chemical potential means. So we are not going there. We don't require there. We are not required to go there as part of our syllabus. We consider this as a starting point for us. Okay, we don't want to get into all that detail. So we understand each and every term. What does delta G mean? What does delta G naught mean? Right? And what Q means. And this is how they are related to each other. इतना लिख सकते हैं अपन? Yes, sir. Yes. लिखो इतना.
Yes, sir. Okay. Now, at equilibrium, delta G is 0 and Q is equal to K. Yes. Yes, sir. Then we can write that delta G naught will be equal to minus RT ln K. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Achha. We also know that we can write delta G naught as delta H naught minus T delta S naught. Yes. Yes, sir. Okay. Now substitute. So we get the following relationship. थोड़ा सा बस इधर उधर टर्म्स को रीअरेंज करा है मैंने. ये आ जाएगा ln k is equal to minus delta h naught by r into 1 by t plus delta s naught by r. Yes. लिख लो यहाँ तक. लिखा. So, 1 second. One second. Yes, sir. Done, sir. No. अब इसमें नेक्स्ट नोटिस करना that we take a assumption, we take an approximation that delta H naught and delta S naught are constant and don't vary much with temperature. Right? That's an approximation which is reasonable, not bad, but we are taking it. Although we have studied this topic, variation of delta H naught with temperature. You remember that topic in thermodynamics? There was this topic called Kirchhoff equation. Yes. So यहाँ पर we are skipping that. We are skipping in the sense we are not taking that to be much of an impact. We are simplifying, and this is a standard simplification. ऐसा नहीं है कि मैं ये अलग से आपको करवा रहा हूँ. You read standard textbooks, तो उसमें भी यही simplification के साथ में आगे बढ़ा गया है. That we are assuming delta H naught and delta S naught don't vary much with temperature. So I can write that at T1 temperature, say K1 is the equilibrium constant, and at T2 temperature, K2 is the equilibrium constant. So if we subtract the two, we can understand how K is going to vary with temperature. इतना लिखो.
लिखा सबने? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. ठीक है, you can also highlight that K2 is the equilibrium constant at T2 and K1 is the equilibrium constant at T1. This is going to give you the simple understanding that if reaction is endothermic, that is ये जो delta H naught का sign है वो positive है, then increasing temperature would increase K. How? यहाँ पे आप नोटिस करोगे अगर डेल्टा H naught पॉजिटिव है और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, if I increase temperature then this term will also be positive, Yes. right? So 1 upon 300 minus 1 upon 400, if I increase temperature, this term will be positive or not? Yes. Yes. Yes, sir. Positive into positive क्या होता है? Positive. तो अगर ln something positive है, that means that something is greater than 1. Yes. यानी कि K2 is greater than K1. तो यानी कि we are saying that अगर reaction endothermic है और temperature बढ़ा रहे हैं तो equilibrium constant बढ़ जाता है. ठीक है. Similarly, if the reaction is exothermic मतलब ये जो डेल्टा H नॉट है इसका साइन नेगेटिव है एंड अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, सो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगा और ये एक्सोथर्मिक है तो ये टर्म नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव. Yes, sir. Yes, sir. ln something negative means that something is less than 1. Yes. So you can say that K2 is less than K1 or you can say that the K decreases. Right? Yes. तो इस Yes, sir. राइट. एंड अगर यहाँ पर हम एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिससे K बढ़ रहा है तो Q लेस देन K हो जाएगा, शिफ्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. राइट. एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो K का वैल्यू कम हो जाएगा, Q becomes more than K, शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगा. क्लियर है? Yes. Yes, sir. लिख लो इसको भी. जिसने लिख लिया, I hope they can answer the question as well. Very easy. क्या आ रहा है आंसर? Doing, sir.
Yes. Right, so यहाँ पर you can notice that as temperature increases, K के साथ क्या हो रहा है? K is decreasing. Decreases. Yes. Exothermic. हाँ sir. Yes. And यहाँ पर temperature बढ़ाने पर we can see that K value is increasing. Implies this is endothermic. So, right, B option becomes your answer. Yes. Right, Arav. Correct. ठीक है. Don't waste time in copying the question. Huh? I hope I have been very clear with that. ठीक है sir. Take a screenshot, copy it later. आंसर करने पे दिमाग लगाओ. ठीक है. Yes, sir. ओके. नाउ यही चीज जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकली, उसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं. सो ग्राफिकली if I plot the relationship between ln k and 1 by t, can you see a linear relationship? Y is equal to mx plus c kind of relationship. Yes. Yes sir. And this is the slope, Yes, sir. right? So if I have endothermic reaction, that means negative into positive. Slope क्या रहेगा? Negative. Yes, sir. Yes. Yes sir. ग्राफ रहेगा. एंड अगर मान लो आई हैड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव स्लोप क्या हो जाता है? पॉजिटिव. Positive. इस तरीके का ग्राफ है. ठीक है. ग्राफ से भी आप देख सकते हो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, तो ये 1/t पर आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड बाय गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट यू कैन सी द k वैल्यू इज इंक्रीजिंग. इस ग्राफ में इफ आई गो टुवर्ड्स लेफ्ट, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो कैन यू सी द k वैल्यू डिक्रीजिंग? Yes sir. Yes. ठीक है. तो यू कुड हैव graphically also visualize that. लिखो इसको, एंड जो जो लिख लेगा वो फिर इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना.
ओके, लिखा साहब ने? Yes. क्या आंसर आ रहा है? So minus 2. D आ रहा है. Okay, so -2 is not correct. You have made the mistake of not reading the question properly. यहाँ पे y axis पे log mentioned है, not ln. So the correct answer is actually B option. Okay, I was expecting this mistake to be made. It's a very genuine, common, careless mistake. If the graph was ln k versus 1 by t, then yes, the slope would have been minus delta h naught by r. And because of the fact that r in the units of calories is 2, right, you would have got the answer as -2. But the thing is that this is the equation to be used, log k versus 1 by t, in which this 2.303 term also comes. समझ में आया? Yes. Yes, sir. The slope is actually minus delta h naught upon 2.303 r, which is 1. So you get delta h naught as minus 2.303 r, so minus 4.606 calorie. ठीक है, मिस्टेक रियलाइज हुई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ठीक है, लिखा सबने ये? Yes, sir. Yeah. Yes. Okay. Now, time to practice. हम लोगों ने काफी सारे फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, right? Yes, sir. Let's put them to test. No need to again copy the questions. The questions are from the booklet only. ये get equipped to advanced section के one or more than one choice correct option के questions हैं. So you have to read the question carefully and answer each and every question by reading each option. So पहले question में मैं आपकी help कर देता हूँ. ठीक है, let's do it together. यहाँ पे बोला जा रहा है for this gas phase reaction, right? डेल्टा एच भी दिया हुआ है, डेल्टा एच नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? Exothermic. एक्सोथर्मिक. एंड बोला जा रहा है इज कैरिड आउट इन अ वेसल, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4 कैन बी इंक्रीज्ड बाय. सो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4 इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब वी वांट द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? अभी तो C2H4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. So let's look at options. Which of these options can do that? If I increase the temperature, Decrease. right? If I increase the temperature and यहाँ पे mention किया हुआ ये exothermic है, तो क्या होगा? K K will decrease. decrease. K decreases. As a result, So shift क्या होगा? Q greater than Backward. 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 Backward हो रहा है, तो yes, this is a valid option.
है ना? Yes. Yes. एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर K डिक्रीज करेगा, implies Q becomes more than K, implies shift Backward. ठीक है, वेरी गुड. Yes, sir. What about the second option, option B? डिक्रीज इन प्रेशर, इसको हम लोग कैसे जज करते थे? तो पहले डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 लेस देन Okay, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव. Negative. Negative. नेगेटिव. ग्रेट. इसका मतलब जो प्रेशर का टर्म है वो कहाँ पर आएगा? प्रेशर इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ क्यू पी का एक्सप्रेशन. Yes. Yes. Setting. Okay, so if pressure decreases, that is what it is mentioned over here, decrease in pressure, तो डिनोमिनेटर घटाने पर क्या होगा? So the QP will P increase. increases. QP Q increase. जाएगा. Implies Q becomes more than K. Yes, so backward. Implies shift किधर होगा? तो P न्यूमरेटर. Oh sorry, my bad. डेल्टा एन जी नेगेटिव, नहीं डेल्टा एन जी नेगेटिव तो P डिनोमिनेटर में है. हाँ नहीं सही तो है. तो न्यूमरेटर में. Correct है. नहीं हमारा एक्सप्रेशन ये था ना, QP is equal to, ठीक है. Yes, sir. That is where I am asking you, वैसे तो आपने रिवाइज करा होना चाहिए था, बट अगर नहीं रिवाइज करा है तो यू आर फ्री टू रेफर बैक टू योर नोट्स, नॉट अ वरी. अभी मैं नोट्स में रॉन्ग कॉपी किया हुआ है. फिर तो अलग टैलेंट है, मतलब देन एक्स्ट्रा टैलेंटेड, आई कांट हेल्प इट. तो यहाँ पर P डिक्रीज करने पर क्या हो जाएगा? Q इंक्रीज कर जाएगा, हाँ. एंड एज अ रिजल्ट शिफ्ट किधर होगा? Backward. Backward. बैकवर्ड. राइट. Yes, sir. ओके. Yeah. व्हाट अबाउट C ऑप्शन, रिमूविंग H2? तो you remember Q is products upon reactants, right? So if I am removing reactant, डिनोमिनेटर को मैं कम कर दूंगा तो Q क्या हो जाएगा? Increase. Increases. Increases. तो इंक्रीज कर जाएगा. इसका मतलब शिफ्ट किधर होगा? Backward. 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 तो ये भी मेरा आंसर रहेगा. वेरी नाइस. व्हाट अबाउट दिस वन? सेम थॉट प्रोसेस. Q Yes, is sir. products upon reactants, एंड यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आई एम Products एडिंग increase हो रहा C2H6, यानी कि आई एम एडिंग प्रोडक्ट. Numerator increase. तो Q क्या हो जाएगा? Decrease. Increase. इंक्रीज हो जाएगा ना, प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूँ, न्यूमरेटर बढ़ा रहा हूँ, Increase, तो increase. बढ़ जाएगा ना. तो शिफ्ट किधर होगा? Backward. 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 ये भी मेरा आंसर रहेगा. ऑल ऑफ दीज आर माय आंसर्स. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आगे के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से दे पाओगे? Yes. Yes, sir. चलो कोशिश करो. चैट पे देना आंसर.
Okay. So I have received a lot of answers. Only Arav ka is correct. ठीक है. Now, why is A and B correct? Soham ने दिया कि सोहैम ने दिया? सोहैम ने दिया है. तो यहाँ पे नोटिस करना, this is what is the trick in the question. NaNO3 is solid, oxygen is gas, and NaNO2 is left behind because it is again solid, that is residue. So A and B, you might feel like giving them the answer, but they aren't. Why? Because correct. Solid या liquid का हम लोग बोलते हैं ना, activity is constant. Right? Even if you increase decrease amount, that is not going to impact. That's why A and B options are not the answers. Right? So that was a extra layer of trick in the question over and above the simple thought process as we know it. Now, if I talk about increasing temperature, so that is coming from again the wordings of the question. Heated लिखा हुआ है, तो heated का मतलब क्या हो गया? ये एंडोथर्मिक है. Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब if I increase temperature, then shift किधर हो जाएगा? Forward direction में. तो ये चीज सही है. This is an correct option. What about pressure? So pressure के लिए again delta Ng is positive. I need to focus on the value of delta Ng. So delta Ng यहाँ पे कैसा आ रहा है? Positive. Positive. Right? Delta Ng positive. Right? So this implies if pressure increases, okay, I am following the chain of thought in my mind only, not rewriting it every time. Pressure numerator में होगा. Yes, sir. तो Q बढ़ जाएगा, implies shift backward हो जाएगा. ठीक है? समझ में Yes. आया? Yes. तो ये Yes, sir. ऑप्शन करेक्ट है. क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, good. Let's try this time. Try to be 100% accurate, very careful, calculated. हो सके तो लिख लिख के करो, हवा में मत करो, डबल चेक करो, सब्जेक्टिव एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों तरीके से आंसर करने की कोशिश करो, but be 100% sure. I want each and every student to give accurate answer. ठीक है?
हाँ, एक ही आंसर आया अभी तक. 2 से 1. ठीक है यार, अब करेक्ट है तुम्हारा आंसर. और कोई आंसर नहीं दे रहा है. डर गए क्या तुम लोग कि नहीं? सर ने इस बार डरा दिया, बोला फुल एक्यूरेट आंसर चाहिए. Sir, 10 seconds. Checking Last again. option check कर रहा हूँ sir. अच्छा अच्छा. Done sir. ठीक है सोहम, तुम्हारा करेक्ट है. अनन्या तुम्हारा भी करेक्ट है. गुड. नहीं वत्सल, गड़बड़ हो गई. राइट ईशान. C, D and E are the correct answers. तो यहाँ पर A option, adding inert gas at constant volume, this has no effect. Yes sir. थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अभी. क्लोरीन गैस, क्लोरीन क्या है? प्रोडक्ट. Yes sir. Yes. You will include. प्रोडक्ट अगर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो क्यू इंक्रीज कर जाएगा, शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगा. हाँ sir. Yes. Okay. Now C option and D option, they are actually related to each other. Like they fall in the same category. That यहाँ पर constant pressure पे inert gas add करता हूँ तो उससे volume increase होता है. Yes sir. Yes. Now how do I judge increase in volume will shift the reaction? So if I look at the delta Ng, this is positive. Positive. Yes sir. So denominator. Right. So V is in numerator of QC expression. So QC. it's in denominator, no? Sir नहीं. denominator So होगा. क्योंकि sorry, हाँ. formula is QC is Right, minus delta Ng. My हाँ bad, sir. my bad. Is in the denominator of QC because it is QC is equal to Qn V की power minus delta. Ng. तो ये minus into positive is minus only. तो ये denominator में आ जाएगा. And now if volume increases, that is denominator बढ़ जाएगा, तो Q कम हो जाएगा. Yes sir. Yes. So forward direction. Implies shift is in the forward direction. And E option is again the same thing. Q is equal to products upon reactants, right? So if I am increasing reactant, है ना, हाँ sir. तो Q का वैल्यू कम हो जाएगा, implies Yes shift sir. फॉरवर्ड हो जाएगा. Forward. ठीक है. कहाँ पे गड़बड़ हुई थी वत्सल? तुमने कहाँ पे केयरलेस सर मिस्टेक? मैंने उल्टा अज्यूम कर लिया था बी और ई को. हाँ, इंट्यूटिव है ना ये तो. मतलब न्यूमेरिकल भी आप सोचोगे, मतलब अगर मैं रिएक्टेंट ऐड करता हूँ तो फॉरवर्ड जाता है ना, अगर मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो बैकवर्ड जाएगा. यस सर, थोड़ी कंफ्यूजन. कंसेप्चुअली भी सोच सकते हो. ठीक है. ऑलराइट. सो लास्ट फैक्टर अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. हम लोगों ने अभी तक 5 फैक्टर्स देख लिए. क्या क्या फैक्टर्स देख लिए हैं? Temperature, inert gas, volume, pressure, and टेम्परेचर. तो ये Yes. लास्ट फैक्टर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट का. एंड दिस इज लाइक काफी इजी because we don't need to get into details right now. Catalyst does not alter thermodynamic parameters. Reaction का K, अल्फा कुछ भी चेंज नहीं करेगा. तो मान लो कोई रिएक्शन था जिसका 10% एक्सटेंट था, like you added reactant and they go 10% forward and attain equilibrium. So now if I add a catalyst, that is not going to change. 10% is going to be 10% only. 10 का 90 नहीं होगा, 10 का 80 नहीं होगा. The only thing which the catalyst is going to do is alter the time taken to achieve that equilibrium. तो maybe वो 10% होने में let's say days या hours लग रहे थे,
maybe with the help of catalyst it can happen in seconds or minutes. Okay? So a catalyst would only alter the time taken to achieve the equilibrium. It will not impact the thermodynamic parameters. How it will impact the time taken, that's a matter of discussion in a chapter called as what? Chemical kinetics. वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे that how will catalyst alter the time taken to achieve. Knows the activation of the Zenith. Correct. बट यहाँ पे लिखने का फायदा नहीं है, उसको वहीं पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलो इसको लिखो एंड देन साथ साथ और प्रैक्टिस करते हैं. इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर दो. Done, sir. All right. Discuss करें. Yes. Yes, sir. So when you look at the first one, okay, what will happen because of catalyst the equilibrium? The answer is no effect. Okay. Now addition of inert gas, So you might be delta and thinking G0. Again, no effect. So हाँ, delta and you G0 must so no effect. Yes, sir. think कि अरे ये तो incomplete सा है. हाँ, sir. But the thing is it doesn't matter. Constant volume पे होता So we no know effect. effect. Constant pressure पे भी no effect. and constant pressure पर we need to check for delta Ng value which is 0. That implies then no effect. ठीक है. Decreasing volume of container, again delta Ng is 0 implies no effect. Yes. Yes, sir. Increasing the amount of CO, तो Q क्या है? Product Agree. upon reactant. So if I am looking at CO, CO is the reactant now. So if I increase that, then Q becomes what? Less. Less. Implies shift forward. Forward. And that is what we wanted, right? We wanted CO2 का increase ना. CO2 का increase मतलब we wanted forward shift. Yes. So D option is our only answer. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो और प्रैक्टिस करते हैं. यहां पर आपको बोला जा रहा है शिफ्ट इज अनडिटरमाइनेबल. अनडिटरमाइनेबल मतलब क्या हो जाएगा? इफ यू रीड द ऑप्शंस देन देयर आर टू चेंजेस इन ईच ऑप्शन. इफ दोस चेंजेस लीड टू कॉन्ट्राडिक्टरी शिफ्ट, लाइक एक बोलता है फॉरवर्ड एक बोलता है बैकवर्ड, तो देन वी विल से दैट वी कांट डिटरमाइन. बट इफ बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग, right, then it is good, then we can Awesome. determine. तो चलो कोशिश करो.
Yes. 1 more minute, sir. ठीक है आरोप, करेक्ट आंसर. Right, Vatsal. Correct answer. So now let's look at it. If I add O2, like reactant को add करता हूँ तो shift किधर होता है? Forward. Correct. Yes, sir. And if I decrease the volume over here, So delta Ng negative. So it also delta Ng यहाँ पे negative है, तो I decrease the volume. Q. Q also negative. So forward. तो यहाँ पर भी फॉरवर्ड आ जाएगा. ठीक है, नेगेटिव डेल्टा एन जी मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव वी की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो व्यू न्यूमरेटर में रहेगा. करेक्ट. एंड इफ आई एम डिक्रीजिंग वॉल्यूम तो क्यू घट रहा है मतलब शिफ्ट फॉरवर्ड होगा. यू कुड हैव आल्सो थॉट ऑफ इट सब्जेक्टिवली that decrease in volume मतलब increase in pressure, increase in pressure Yes, shift sir. towards lesser gaseous modes which is forward. ठीक है, दोनों तरीके हैं. Addition of CO, CO is again reactant, so it will shift the reaction forward. Removal of CO2, it is product. Removing product will also shift the equilibrium Forward. forward only. Yes, So दोनों ही forward बता रहे हैं. Increasing temperature because it is exothermic, right? यहाँ पर plus heat मतलब क्या होता है? Heat release हो रही है ना? Exothermic. Yes. Yes. This means exothermic. If it's exothermic, then increasing temperature will shift the equilibrium backward. Yes. And decreasing volume, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, पूरा हाँ. फॉरवर्ड रहेगा. राइट. एडिशन ऑफ CO which is forward, it's a reactant, and increasing temperature अभी डिस्कस किया बैकवर्ड. तो फिर ऑप्शन C and ऑप्शन D are contradictory in nature ना, like they are having contradictory factors. एक फॉरवर्ड बोल रहा है, बैकवर्ड बोल रहा है, those are the undeterminable ones. Yes. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो थोड़ा सा थर्मो की बुकलेट के क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं. तो देयर वर दीस क्वेश्चंस इन थर्मो बुकलेट व्हिच वर बेस्ड अपॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट ओनली. तो वहां पर तो नहीं कर पाए होंगे आप, तो यहाँ पर अब इनको ट्राई करके देखो क्या बन पा रहा है. हम्म,
So B. क्या आ रहा है ऑप्शन? So B. नहीं, ऑप्शन बी. तो B बोला. अच्छा बी बोला तुमने, सॉरी मैंने ए सुना. ओके, कैसे जज करा? तो यहाँ पर बाय रीडिंग द क्वेश्चन वी कैन असेस दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा जा रहा है. Yes, sir. Yes. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन N2O4 एंड NO2 का इक्विलिब्रियम. बेसिकली यही दो ऑप्शंस में है. Yes. Now based on the given data, can we determine delta H of this? Yes. It will be 16.18 minus 2.31, that is positive, Positive. Yes. right? So यहाँ पर ये एंडोथर्मिक हो गया, Yes, sir. right? एंडोथर्मिक हो गया तो इसके लिए क्या होगा? हाई टेम्परेचर्स पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्टेड रहेगा? Forward. Right? Equilibrium shifted forward, that is more NO2. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, that is what will be the more stable species. And lower temperature, equilibrium shifts where? Equilibrium shifts backwards. Backwards. That Yes, is more of N2O4, that will be the more stable species out of the two. yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका इस तरीके से आंसर रहेगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Try this.
ऑलराइट, यहाँ पे अब थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है. कैसे सोचना पड़ रहा है? यहाँ पे यू हैव टू इन्फर द इंफॉर्मेशन. ट्रांस टू ब्यूटेन is more stable as compared to cis to butene. How do you infer that information? This means enthalpy associated with the trans is lesser than enthalpy associated with cis. More stable implies lesser energy. ना ये हमारा एक thought process चलता आ रहा है ना since forever. Yes, sir. Yes, sir. Right? So trans is more stable. That means it has lesser energy, lesser enthalpy as compared to cis form. Yes, sir. Right? So if I assess this equilibrium, trans and cis, right? तो इसका delta H क्या हो जाएगा? More minus less, that is positive. Yes. Product minus reactant product is higher enthalpy, right? यानी कि higher lower लिख देता हूँ मैं. That will be more appropriate. Higher minus lower. तो ये positive आ जाएगा, right? फिर heated की बात करी जा रही है. Heated का मतलब क्या हो जाएगा? If temperature increases, then equilibrium किधर shift करेगा? Forward. Forward. तो इसका मतलब trans का concentration क्या हो जाएगा? Decrease. Decrease. Increase कर जाएगा. तो ये B option आपका आंसर हो गया ना? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. समझ में आ रहा है कैसे इस एलसीपी को यूज करना है, अप्लाई करना है? Yeah. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, बट दैट विल बी नाउ ऑन सम एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम्स. ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सी द एग्जांपल्स एंड नो फॉर योरसेल्फ. सो लेट्स से ये दो इक्विलिब्रियम्स है. ठीक है, एक H2O लिक्विड एंड H2O गैस के बीच का इक्विलिब्रियम है. या फिर यू कैन ऑल्सो लुक एट हाइड्रेटेड सॉल्ट और उसके वेपर्स, वाटर वेपर्स के बीच का इक्विलिब्रियम है. नाउ बेस्ड ऑन सम एक्सपेक्टेड नॉलेज, आई एम आस्किंग यू फॉर दीज इक्विलिब्रियम्स what will be the effect of temperature, what will be the effect of pressure. If I increase temperature, then shift किस डायरेक्शन में होगा? If I increase pressure, तो फिर shift किस डायरेक्शन में होगा? And that is it. I am not giving any more information because some knowledge is expected from you related to such common equilibriums. जल्दी जल्दी बताओ. आई थिंक टेम्परेचर तो काफी आसान है. Yes. Sir. मैं जब लिक्विड को हीट करता हूँ तभी तो उसके वेपर्स Yes, बनते हैं ना. Yes, sir. Yes, We know that this is endothermic. Yes, sir. Yes, sir. That is like expected knowledge. तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो शिफ्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. Yes, sir. हाँ Yes. sir. Okay. What about the effect of pressure? How do we judge that? Change in Delta. moles. Delta. We look at delta Ng. तो यहाँ पर delta Ng पॉजिटिव है ना? Yes, तो sir. अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लेसर गैसियस मोल्स, दैट इज बैकवर्ड चला जाएगा रिएक्शन. हाँ sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. You could have thought subjectively also, sorry numerically also, कि delta Ng पॉजिटिव है, P न्यूमरेटर में है, तो P बढ़ाऊंगा तो Q मोर देन K हो जाएगा, शिफ्ट बैकवर्ड आ जाएगा. ठीक है, राइट. आई होप समझ में आ रहा है. इट्स नॉट गोइंग टू फास्ट. Yes. Yes sir, समझ आ रहा है. If it is going too fast, then definitely let me know. लिखो इसको.
Done, sir. So 1 second. Yes, sir. All right, चलो ये वाला try करो. This second example. What will be the effect of temperature and effect of pressure on this equilibrium? Ice and water. Done, sir. Okay. Now, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आई थिंक दैट इज प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. Yes. This is endothermic, so if I increase temperature, the equilibrium will shift in the forward direction, right? Yes, sir. But यहाँ पे pressure is something which is important for you to learn. So one of the answers that I get, which has been given by Soham as well, that because delta Ng is equal to 0 implies no effect is incorrect. Okay, this is not the case. यहाँ पर notice करना delta Ng is not defined. ये I think आप लोगों को पता नहीं था, but अब आपके लिए एक नया point आ रहा है सामने, इसको समझना. There should be at least one gaseous species. Right, to define or to describe delta Ng of a reaction. तो यहाँ पे solid है, liquid है, there is no gaseous species, तो यहाँ पे delta Ng 0 मत लिखना. Delta Ng इस केस में not defined है. Then how to assess impact of pressure, right? How to study or how to understand effect of pressure. तो उसके लिए this statement comes in handy. It's a very simple statement that if pressure increases,
then equilibrium will shift towards lesser volume or more density. That is what you should now carry with you as a learning. इसका actually जो proof भी है वो thermodynamics में आता है, but I am sure कि that will just make things more complicated for you. You remember this dg is equal to vdp minus sdt, ऐसा कुछ करा है आपने थर्मो में? Have you done something like this? नहीं करा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, याद नहीं आ रहा। तो फिर कोई मेरा दिक्कत नहीं, बस थर्मो आप कंप्लीट नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो बस. यस Let's keep it simple, let's not complicate it further. That if pressure increases then equilibrium shifts towards lesser volume or higher density. तो यहां पे आप नोटिस करोगे between ice and water किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? This is आइस expected knowledge. सॉलिड जीरो लिक्विड हाँ, ये अनोमलस केस होता है वाटर का. टिपिकली Yes. सॉलिड्स और लिक्विड्स में सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, दैट्स लाइक कॉमन अंडरस्टैंडिंग. बट Yes. वाटर का ये अनोमलस केस होता है जो कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा जूनियर क्लासेस में भी. Yes. So we know that ice floats on water, like water की डेंसिटी ज्यादा होती है. हाँ. तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो वाटर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस would be favored by higher temperature and higher pressure. राइट आपने वो इनफैक्ट वो ऐसे एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना जूनियर क्लास में, जिसको आप ऐसे क्या बोलते हो, रेगुलेशन क्या बोलते हैं, दैट इफ यू कंप्रेस टू पीसेस ऑफ आइस टुगेदर तो वापस से एकदम फ्रीज होके चिपक जाते हैं. Yes. तो उसमें क्या होता है, लाइक यू हैव आइस, यू हैव अनदर पीस ऑफ आइस, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर तो जहां पर ये लोकल रीजन में क्या होता है, मेल्टिंग हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे मेल्टिंग हो जाएगी बिकॉज यू अप्लाइड हायर प्रेशर, एंड वंस यू रिलीज द प्रेशर तो फिर वापस से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा यहाँ पे. तो इट इज लाइक कि ये दोनों चिपक गए. करा होगा ना ऐसा आपने? Yes. Sir. लिखो इसको भी. बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा है, बॉइलिंग पॉइंट में मतलब प्रेशर इंक्रीज पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है. हाँ करेक्ट. ठीक है, लिखा सबने ये? Yes. यस All right. Now, let me ask you one more question. ठीक है, and again based on some expected knowledge only you will have to answer. ठीक है, I'm not giving any more information than just the equilibrium in front of you. Graphite and diamond के बीच में, कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड के बीच में I am asking you what is going to be the effect of pressure and temperature on this equilibrium.
कुछ आ पा रहा है किसी को? Yes, sir. What is the effect of temperature? So forward direction. forward If it increases in forward direction. Forward direction. Why do you think so? So more generally, heat is needed to convert graphite into diamonds. So we consider So it an high ingot. temperature and high pressure. High pressure. So, Is not ये तो आप लोगों ने एक्चुअली अपना जीके लगा के सॉल्व कर दिया, right? That formation of diamond from graphite is favored by high temperature and high pressure. Now, how do I understand pressure? Pressure का तो आपने यहाँ पे समझ ही लिया. Delta Ng not defined. yes, sir. Delta Ng is not defined. Implies किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? शिफ्ट प्रेशर इंक्रीज करने पर शिफ्ट टुवर्ड्स मोर डेंस फेज Yes, Yes. sir. Yes, sir. and between graphite and diamond we know that diamond is more dense, Yeah. right? Shift towards more density, that is diamond. and यहाँ पर नोटिस करना, अगर मुझे टेम्परेचर का नोटिस करना है तो मैं कैसे नोटिस करूंगा? ग्रेफाइट जो है, दिस वाज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म. Yes, sir. इसका हमने डेल्टा एच एफ नॉट 0 असाइन किया हुआ है. Was diamond more stable than graphite? No. Diamond हाँ, was sir. less stable. अगर less stable है तो इसका मतलब हायर एंथैल्पी होगा ना. Yes, sir. Yes. Yes. तो अगर हायर एंथैल्पी है और ग्रेफाइट का पॉजिटिव सॉरी 0 असाइंड है, यानी कि इसका डेल्टा एच एफ नॉट क्या होगा? समथिंग पॉजिटिव. Yes, sir. तो Yes, डेल्टा sir. एच नॉट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन विल बी पॉजिटिव माइनस 0, दैट इज समथिंग पॉजिटिव, Yes. है ना? तो that is also then helping you understand that high temperature पर for endothermic reaction the equilibrium shifts forward, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये अगला वाला एग्जाम्पल बताओ. फॉर्मेशन ऑफ सोडा. Formation of soda is favored by what temperature pressure conditions? Like intuitively तो आपको पता ही है that formation of soda is favored with or favored by high pressure High pressure, हाँ. less temperature. and lower temperature. More. लोअर कोल्ड ड्रिंक जो है लोअर टेम्परेचर पे रखी जाती है ना, Yes. Yes, sir. ताकि CO2 डिसॉल्व रहे उसमें. Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो CO2 निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. लाइक CO2 व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, बॉन्ड फॉर्म करने लगता है. तो उससे क्या होता है? हीट रिलीज होता है. डेल्टा एच क्या है यहाँ पे? नेगेटिव, राइट? सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट? एंड डेल्टा एन जी यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे, यहाँ पे तो डिफाइन हो जाएगा ना डेल्टा एन जी. डेल्टा एन जी यहाँ पे नेगेटिव रहेगा. तो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स lesser gaseous moles, that is forward. So यहाँ पर you can make the statement that dissolution of CO2 in water, right, formation of soda is favored by lower temperature and higher pressure. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So I think ये subjective तरीके भी समझ में आ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes. हाँ, sir. All right. Now मैं आज के notes आपके साथ share कर दूंगा because I'm sure there are many things we might have not been able to copy down. तो
2 questions और करते हैं, then we'll close today's session. ठीक है, and I'll also share the notes with you. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो. Try and see if you are able to get an answer to this question. And इतना ही है. There is no other information that is given. Based on your knowledge, based upon your understanding, आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है. Increase in temperature favors the forward reaction for which option? So basically we have to check which all reactions are endothermic, right? Correct. टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखना है तो आपको रिएक्शन का डेल्टा एच का साइन देखना पड़ेगा. अब the thing is that you might be confused as to how can I just look at the reaction and comment whether it is endothermic or exothermic, right? तो Yes, sir. यहाँ पर some learning comes that A and D are actually combustion reactions. If you notice carefully, SO2 plus Yes, O2 sir. combustion, hydrogen plus oxygen giving water is combustion. So we know that combustion reactions are exothermic. And as a consequence, यहाँ पर temperature increase करने से shift forward नहीं जाएगा, backward जाएगा. Then C option is something which is based upon the definition of enthalpy of formation. We had just discussed it. That graphite is most stable, उसका enthalpy of formation 0 assign होगा, and diamond was positive. Based on the similar logic, can you assess option B as well? Yes, so O2 is more stable than O3. O2 is more stable than O3. So delta H यहाँ पे क्या हो जाएगा? वापस से negative हो जाएगा, Yes, sir. right? So the only option correct for this is C option. समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो last question try कर लो. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा जब भी ये होमवर्क डिस्कस करेंगे, so please ensure that you are working on the homework that I have given you, Yes, sir. because we are almost done with the chapter. There is only one small topic that is left which we'll do in the next class, so we need to use the class to discuss doubts and ensure that we are closing this chapter thoroughly. Yes, ठीक sir. है. Yes, sir.
ऑलराइट, क्या आ रहा है आंसर? सर एक 9% सेकंड, and क्वेश्चन तो क्वेश्चन समझ रहा हूँ अभी भी, एक सेकंड. राइट आरव, करेक्ट आंसर. Yes sir. राइट, सो आया आंसर. yes. हाँ सर, शायद. High pressure and high temperature are going to forward this reaction. Yes sir. Right, absorption of heat, endothermic high temperature समझ में आई क्या? Decrease in Yes. volume हो रहा है ना, तो decrease in volume मतलब right hand side पे lower volume है, तो if I increase the pressure, the equilibrium shifts towards lesser volume और higher density ना. Yes. Forward Yes, हो sir. रहा है. Yes sir. Right, समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ sir. Yes. Great. ठीक है. क्लियर है सबको? Yes sir. Yes. Okay then. चलो. All right. Any questions? No sir. No, sir. No, sir. Sir, one question. Hmm. सर बोलो. पोर्शन कब तक खत्म होएगा हमारा? Like see, typically it runs till October. हाँ सर. है ना? ओके सर. तो अक्टूबर के अराउंड आसपास खत्म हो जाएगा. ऑलराइट सर. ऑलराइट, चलो ठीक है. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर. Thank you, sir.